Hey guys, welcome back to my YouTube channel Alpha Dental Clinic. I'm Dr. Nevin Abraham back with another interesting video. So today we are going to start with a new series called What If, and there's going to be a lot of short videos which I will be discussing in this What If series, and it would be in an episode wise. जो टॉपिक्स जो मैंने सोचे हैं डिस्कस करने के लिए वो अक्सर पेशेंट्स उसको निगलेक्ट करते हैं. सो इट्स लाइक जनरल डेंटिस्ट्री टॉपिक्स है. सो जैसे कि आपने ये वीडियो के जो टाइटल आपने पढ़ा है दैट इज़ व्हाट इफ़. सो इसका ये मतलब है कि अगर आपने XYZ टॉपिक विच एवर आई विल बी डिस्कसिंग उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे या फिर उसको अगर आपने डे टू डे लाइफ में डे टू डे ओरल हाइजीन प्रैक्टिस में या फिर जो डेंटल ट्रीटमेंट्स है XYZ जो भी है उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है. So today's topic which I would like to discuss is what if you don't brush and floss your teeth. Yes, brushing and flossing is the most important and the basic thing which you have to put into practice. ब्रशिंग तो लोग काफ़ी सारे करते ही है, लेकिन फ्लॉसिंग इज़ समथिंग विच मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन स्किप ऑन टू. द रीज़न बिहाइंड इज़ एदर लोगों को उसके नॉलेज के बारे में नहीं, उसके दे डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट, और people try to they become so lazy to do that because it's a bit cumbersome. थोड़ा टाइम टेकिंग है उसको थोड़ा like you need to spend some time to floss. आपके जितने भी दांत के बीच के जो सर्फेसेस है उसको काफ़ी टाइम लेके उसको ब्रश करने की ज़रूरत है. ब्रशिंग तो डेफिनेटली आपको करना ही है, लेकिन ब्रशिंग में भी काफ़ी सारे लोग, जबकि 2 टाइम ब्रश करने की ज़रूरत है, पीपल ब्रश ओनली वंस डेली, विच इज़ रियली बैड बिकॉज देयर आर मेनी स्टडीज़ विच हैव शोन इन डेंटिस्ट्री, in dental science actually, that you need to brush even before going to sleep. That is nighttime brushing. After having your meals, you need to first floss your teeth and then brush your teeth, followed by, if possible, you can take any mouthwash, but you need to give a gap of at least half an hour before taking any mouthwash after brushing. Now the reason is, after brushing, like the toothpaste that you will be using, it contains a lot of fluoride in it. So this fluoride needs to act, the fluoride which is present in the toothpaste needs to act onto the tooth, because fluoride ऐसी एक चीज़ है which helps in protection of the tooth from further decay or any bacterial activity. Now further decay, it prevents it. It's like एक शील्ड जैसा है दांतों के लिए, which protects the tooth from cavity formation from the bacteria. So उस फ्लोराइड की जो एफिशिएंसी है कम से कम 30 मिनट तक दांतों के सर्फेस पे होनी चाहिए. एंड इसलिए माउथवॉश जब आप यूज़ करेंगे, माउथवॉश की जो कंटेंट है वो है क्लोरेक्सिडिन. तो क्लोरेक्सिडिन भी एक इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जिससे आपकी जो दांतों की जो मतलब मुंह के जो माउथ के जो बैक्टीरियल का जो एक्टिविटी है उसको काफ़ी कम कर सकता है. बट उसकी जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो आफ्टर फ्लोराइड की एफिशिएंसी के बाद, मतलब आफ्टर यू ब्रश योर टीथ यू नीड टू गिव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर यू डू अ माउथ रिंस. वरना क्लोरेक्सिडिन, ऐसा कोई स्टडीज़ में बताया जाता है कि क्लोरेक्सिडिन फ्लोराइड की जो एफिशिएंसी है उसको कम कर देती है, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लोराइड फॉर द टूथ. क्लोरेक्सिडिन टूथ को ज़्यादा कुछ करते नहीं है, बस एक अपने मुंह के जो इन जनरल बैक्टीरियल का जो लोड है उसको बस कम करती है, दैट्स इट. लेकिन टूथ को कुछ एज सच शील्डिंग नहीं करता. नाउ why nighttime brushing is the most important is, as per a lot of studies and researchers which has been involved in the dental science, हमारे जो बॉडी के काफ़ी सारे डिफेंस मैकेनिज्म दे आर अंडर रेस्टिंग फेज फ्रॉम 10 PM to 6 AM, बिकॉज काफ़ी सारे वो टाइम में अपने जो बॉडी के जो
डिफेंस मैकेनिज्म है काफ़ी लो होती है। तो उस टाइम अगर दांत के सरफेस क्लीन नहीं है, बिकॉज हमारे जो मुंह में सलाइवा करके एक चीज़ होती है, सो सलाइवा कंटेन्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, उसको नरिशमेंट के लिए फूड पार्टिकल्स की ज़रूरत है। सो इफ़ दोज फूड पार्टिकल्स आर नॉट क्लीन्ड अवे फ्रॉम योर टूथ सर्फेस, दैट helps in progressing a bacterial activity onto your tooth surface, and that's how cavity develops. वो एक रात को या 2 रात में नहीं होता है, repeated over years and years या फिर months and months या फिर काफ़ी साल तक अगर आप ये नाइट टाइम ब्रशिंग की जो प्रैक्टिस अगर आपने मेंटेन नहीं किया है, so that's how cavity develops. So what you need to do is you have to follow certain norms that, like रात के जो brushing है you have to put into practice. Tooth के जो surface के ऊपर अगर आपने food particles नहीं निकाला है, so that acts like a nourishment to these bacteria. So bacteria के लिए ना party बन जाती है during that time. So that's how the cavity develops. So today's lesson for the day is you need to do nighttime brushing. Like before going to bed, you must brush your teeth. And regarding flossing though it's a bit cumbersome and थोड़ा time taking है, you must floss between each teeth. अभी brushing का जो techniques and flossing के भी जो techniques है, that I would be showing or demonstrating it in my further videos in a different series which I am planning. So उसमें उसके बारे में थोड़ा detailed explanation करूँगा. लेकिन you must floss your teeth. Now if you don't floss your teeth, क्या क्या problems हो सकती है उसकी वजह से, I have few slides, few pictures which I'll show you, and you'll get a better detailed idea about the importance of why you should be flossing your teeth. This is an intraoral image of a patient. Now if you can see the area which is marked in red, वो ऐसे एक दाग जैसे दिखता है. ये आगे का दांत है जो एक स्टेन जैसा दिखता है. ऐसा सेम अपीयरेंस पीछे के दांत में भी दिखता है. जैसे कि ये पेशेंट का कंप्लेंट था कि खाना अटक रहा था आगे के दांत में और थोड़ा सा सेंसिटिविटी भी था. So X-ray लिया हम लोग ने and we found a small cavity, and after we cleaned the cavity, see how huge it was. So this is a picture which explains about the different layers of the tooth. The first layer is called enamel, which is the most strongest and hardest portion of the tooth. This layer does not contain any nerve fibers. So cavity जब इस layer पे होती है तो patient को अक्सर कोई complaint होता ही नहीं है. Now the second layer is called dentin. This zone is the most sensitive layer of the tooth. तो cavity जब इस layer पे पहुंचती है तो patient अक्सर complaint देता है कि कुछ ठंडा खाने पे झंझनाहट होती है. That's because it's in this zone, the most sensitive layer of the tooth. The third layer is nothing but the pulp tissue which contains a lot of nerve fibers in it. जब cavity इस zone में पहुंचती है तब patient को बहुत दांतों में बहुत दर्द होता है. जैसे कि अभी रात को सोते टाइम या कुछ खाना खाते टाइम बहुत दर्द देता है, बहुत पेन होता है. दैट इज़ बिकॉज जो कैविटी में जो बैक्टीरिया है दैट हैज़ इरिटेटेड दिस नर्व फाइबर्स एंड दिस नर्व टिश्यूज एंड कॉज्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व, एंड जो नीचे के जो पोर्शन है रूट के पोर्शन वहाँ पे सब इन्फ्लेम्ड हो जाता है एंड इन्फेक्शन बन जाता है. नाउ इफ़ यू सी द एरिया विच इज़ मार्क्ड इन रेड सर्कल, दैट्स एग्जैक्टली द area which I want to emphasize on. Now that's the point. If you don't floss your teeth in between those areas, cavity वहाँ से शुरू होती है and progress करता है into the first layer, then into the second and ultimately into the pulp. तो वो जो एरिया जिसमें मैंने रेड सर्कल मार्क किया है दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एरिया विच हैज़ टू बी फ्लॉस्ड. वहाँ पे ब्रश पहुँचती नहीं है. सो गाइज प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्लीज़ डू फ्लॉस योर टीथ एंड मेंटेन दीज zones which is the most risky and the most crucial areas of a tooth. This is an X-ray of a patient who reported to us last week until she repeatedly gave a complaint of tooth pain. जब इवेल्युएट किया इंट्राओरली टूथ एकदम परफेक्ट था विथ नो डीके. एक्सरे लेने पे वी फाउंड दिस ह्यूज डीके.
Look at the amount of tooth destruction with caries involving the third zone, that is pulp. So friends, this is why I emphasize more and more on flossing. Please do floss your teeth at least before going to bed, if not in the morning time. If you can do twice daily, it's the best service you can do to your God-gifted teeth. So that's it for today's session on what if you don't brush and floss your teeth. If you like the content of this video, please do like and subscribe to our channel. So stay tuned for more interesting upcoming videos. I'm Dr. Nevin Abraham signing off. Cheers.